Good morning, Praveen sir. Good morning to all the dear participants. We are going to start the webinar in just a few minutes. Kindly mute yourself. Praveen sir? Yes, can you hear me? Yes, sir. How are you? I'm fine, thank you. Okay, sir. I don't know, there might be some network issue. Okay, sir. Sorry. Yeah, can you hear me now? Yeah, am I audible? Thank you. Yes, sir, you are very much audible. Okay, thank you. Should we start, Praveen sir? We already have 100 participants, so I think we can start now. Okay, just a minute. Yeah, I'm just getting it started. Okay.
Just let us know when you are ready. Yeah, just I'll be ready in a couple of minutes. Okay, sir. No problem. Yeah, just 1 minute more. Okay, sir. Hi, everyone. Very good morning to all of you. And I feel privileged to be here today morning. And it's really a great, I feel really great talking to people. But unfortunately, due to the current situation for the last 2 years, I have always missed opportunities. I have always missed meeting people in person. And but anyhow, online learning has its own advantages as well. And we appreciate that thing as well. So before I say, I want to share my slides first before I say something else. Yeah, this. Sir, we have our principal ma'am is going to join us. So can we Okay. wait for just few minutes? Yeah, sure, sure.
ma'am is a very good morning to principal ma'am. Should we start, ma'am? Yes, please. Thank you. Should I A start? very good morning Okay. and a hearty welcome to everyone in today's international webinar on visualizing analysis and algebra, organized by Department of Mathematics of M.D.S.D Girls College, Ambala City. I extend my warm welcome to our resource person, Mr. Praveen Chikara from University of Illinois at Urbana-Champaign. I, on behalf of whole M.D.S.D Girls College, would like to express my sincere thanks to Mr. Praveen for sparing his time to share his knowledge with all of us. I welcome our worthy and respected principal ma'am, Dr. Kiran Angra, who has always been a source of inspiration and motivation for all of us. Our dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, it's a belief endorsed by our principal ma'am. I welcome you, ma'am, and I acknowledge your presence. I welcome all the dear participants who have joined us today, not only from India, but across the globe. Today, we all have gathered virtually to visualize analysis and algebra. Thank you to Praveen sir for coming forward with this unique topic. As a teacher, I have always felt that students find these two topics very difficult, as these are more of theoretical and they are unable to see their applications in their everyday life. Dear all, Mr. Praveen is currently pursuing his MS in Mathematics Education from University of Illinois at Urbana-Champaign. He did his master's from IIT Delhi. His research basically deals with the issues of identity and instructional practices connecting realistic mathematics and abstract mathematical concepts in college education. He is also the managing trustee of Mathematical Community Trust, which is an NGO promoting mathematics across the country by conducting a number of workshops in colleges and university campuses. Sir, it's our privilege to have you among us. And now it's the time that we all have been waiting for. Sir, now I invite you for your lecture and over to you, sir. Thank you very much. And it's again, I'm saying it's a privilege to be here, at this platform, and I'm thankful to the college and principal ma'am, Dr. Kiran Anga, AANCHAL ma'am, SUNITI ma'am, faculty members at the college and the Department of Mathematics. It's I really appreciate it. It's a wonderful. I take such things as opportunities, not only to share my views, but to learn from others. So these are just instances in my career that I feel which are very important when I'm sharing and when I'm asking people to share their views as well. And that is what we intend to do today in the session. It's not a long session though. I believe that there would be a lot of things in such a short span of time, and all those things, they demand participation in form of chat box messages or in form of polls. So they will be really interactive. Let me share my screen first. So again, I'm thankful to the college, M.D.S.D Girls College. Yeah, it's a wonderful opportunity. And also one more thing, I would like to share a very short video which would create the underlying principle of today's event. It's a very short video by an eminent mathematician from an Indian origin. I hope you all know him. Yeah, I'm just sharing my screen again. I think just finally, the role of intuition in life is very important for all of us. Is maths contrary to intuition, or are they complementary? Does it remove intuition, or is it help intuition? It's just like
any art, I sort of feel that when mathematics is taught, one of the goals should be to develop intuition about mathematics. And right now the way it's taught as a way of memorization, and so the intuition is not developed. But if you discover the way to solve problems on your own, you develop an intuition. So when the next problem comes that's not exactly the same kind as the first, you'll have an intuition to say, oh, these are the changes I need to make in order to solve it. That development of intuition is very important. And it's very important in my own mathematical research, having developed intuition for many years and solving different kinds of problems. And if I just memorize, this is how you solve this problem, this is how you solve this problem, and then a third kind of problem comes, and those same steps don't work, that's a problem. But if you had developed an intuition where you could make those slight changes, just like when you're painting, you develop techniques, you develop an intuition of how to express various emotions by this combination of colors. In the same way, in mathematics, you develop an intuition for the kinds of techniques and how to combine them to solve different problems when they come up. So intuition, mathematics is a rigorous subject. I would like to speak in Hindi as well. I'm sorry if someone may not be able to understand Hindi. Because of the participant, I would like to say, because mathematics ke andar we have rigorous topics, or that doesn't mean that we should away from intuitions. As Manjul Bhargav says, that mathematics is developed using intuition. And that is what the power of intuition through some examples, that is what we are going to explore today through some specific examples. And yeah, so finally, I will continue my slides. And okay. So in this webinar, as I mentioned earlier, we would visualize some basic concepts of analysis and algebra if time allows. And the second thing is the intended audience, preferred audience is undergraduate and graduate mathematics students. However, other interested people can also find it helpful. And the third, your participation is required, and it's only restricted to polls and Q&A, I think, in the end. So, and yeah, as I mentioned earlier, I would like to use Hindi as well. So unfortunately, when I present, like it's unfortunate though that it's very difficult कि मैं हिंदी का use करूँ. It's especially, it's not that मैं हिंदी से comfortable नहीं हूँ. It's about कि हम presentation करते हैं तो we tend to be like English, like way of communication. So, लेकिन I would try my best. So sequences हमारे पास real analysis के अंदर होती हैं, और I would be little fast. So sequences को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. We can consider those indices as time instances. वो एक वक्त की तरह है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है sequence start moving. Sequence कहीं जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जहाँ जाने की कोशिश करती है वो जरूरी नहीं एक specific point हो. It's not necessary. So जैसे यहाँ पर we have 4 examples. So can you tell me which one of them are going to a specific point? Can you write in the chat box? I would stop for 15 seconds. और आप सिर्फ chat box में you have to write. Don't click enter. Enter तब करना है जब I say. Yeah, please type which one of them are going to a specific point. Just write. Don't enter. I'll wait for 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hit the enter button. So I can see a lot of responses, 2, 3, 2, 3, 3, 4. So there are diverse opinion I can see here. That's great to see. So here, yeah, that's great to see. I'm thankful that you're sharing your views. So here, जैसा आप पहली फिगर में देख सकते हो, तो इसमें ये ऊपर नीचे हो रही है, तो आप मतलब कि we cannot say that it's necessarily going to some point. किसी की कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसे हम मैथ में बोलते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ सीक्वेंस कहीं जाने की कोशिश कर रही है,
और तीसरे में भी ये जाने की किसी के पास कोशिश कर रही है, फोर्थ में भी जाने की कोशिश कर रही है, बट इट्स टुवर्ड इंफिनिटी, दैट इज नॉट अ नंबर। तो यहाँ पर एक बहुत ही बहुत जबरदस्त चीज आप देख सकते हो, कुछ लोगों ने 4 बोला और कुछ लोगों ने 4 नहीं बोला है। तो 4 एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो सकता है इफ यू आर ट्रीटिंग इंफिनिटी एज समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू लाइक बिहेविंग सिमिलर टू रियल नंबर्स। अगर आपको थोड़ा पता हो एक्सटेंडेड रियल सिस्टम नाम की चीज होती है, तो वहां पर लोग इंफिनिटी को भी एक नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो लेट्स मूव अहेड, वी कैन सी हियर, सो हियर नाउ यू कैन सी, अगर हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हम मॉडुलस का यूज करते हैं, तो मॉड ऑफ a माइनस बी। तो अगर हम लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सो मतलब an l के पास जाने की कोशिश कर रही है जब n बहुत बड़ा नंबर बनने की कोशिश कर रहा है। सो an और l, द डिफरेंस बिटवीन a and l, दैट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर as n is achieving higher and higher values. So जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, an और l करीब आते जाएंगे। लेकिन ये स्मॉल करीब आना ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, किसी के लिए करीब मेरे लिए वो क्लोज हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो क्लोज ना हो। सो हियर, तो उसके लिए हम मैथमेटिकली इस चीज को डिजाइन करना चाहते हैं कि एन और एल के बीच का फासला वो कम से कम हो, और इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करना चाहते हैं कि वट एवर वी थिंक ऑफ, हमारे दिमाग में आने वाला कोई भी नंबर हो, एन और एल के बीच का फासला उससे भी कम हो जाए। मीन्स इफ वी assume epsilon, any positive number an and l, the distance between them that becomes smaller than epsilon. लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा वक्त हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड वक्त ढूंढने का मतलब क्या है, एक लंबे टाइम बाद ऐसा होगा कम से कम, मतलब वो लंबा टाइम वी वुड इंडिकेट दैट टाइम बाय m। सो m मतलब कि यहाँ पर ये जो हमने लिखा है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए, हमारे दिमाग में आने वाले नंबर के लिए एक ऐसा वक्त मिलेगा m, जिसके बाद मतलब हमेशा के लिए, n ग्रेटर देन m का मतलब है m के बाद जितने भी वक्त आएंगे हमेशा के लिए ये बात सच होगी, an और l के बीच का फासला हमेशा के लिए कम हो जाएगा। और किससे कम, हमारे दिमाग में आने वाले किसी भी नंबर से, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों हो। So that's very interesting. So to define this thing mathematically, whatever we think of, whatever epsilon is, we find a point, a time instance after which the sequence comes closer to L. So that's very interesting. So here, यहाँ पर फिर से मैं कुछ questions यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे. I'm just putting a link in the chat box. I would request you to go to the link and answer the poll. It's very interesting. Please go. Please click this link. Yeah, I'm sharing the screen and let's see what is going on there. Okay. Participants, you are requested to kindly mute yourself. So I can see people are there. Yeah, I'm sharing my screen, window screen. So can you see the questions? You should be able to see the questions. Oh, means this question is being answered. Okay, there are 2 questions. So yeah, that's interesting. So false, true, who wins? So there are 2 questions. If you have answered the first one, go to the second one. There are 2 questions. If you have answered, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. That's great. That's great. So यहाँ पर ऐसा है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है और हमें वो वक्त 100 मिलता है, तो क्या वही वक्त एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5 के लिए भी काम करेगा? मतलब एप्सिलॉन को हमारे दिमाग में वाला नंबर है, इसको हम बदल सकते हैं. तो क्या वही वक्त जो 1 के लिए मिला है, क्या वो 0.5 के लिए भी वर्कफुल होगा?
आप मतलब कि दिस इज एनोनिमस, आप कुछ भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, आप कोई नहीं देख पाएगा आपने क्या रिस्पॉन्स किया है. सो प्लीज आंसर इट. ओके, सो सेकेंड वन, एप्सिलॉन की वैल्यूज को अगर छोटा करने की कोशिश की जाए तो एम पर क्या फर्क पड़ेगा. तो यहाँ पर टाई बना हुआ है. दैट्स ग्रेट. सो हम इस चीज पे दोबारा से आएंगे. इफ यू हैव नॉट आंसर, ओह नो चेंज, दैट्स ग्रेट, इंटरेस्टिंग. सो अगेन मैं फिर से उसी चीज पर आता हूँ. इट्स we will look at it through different angles. So हम यहाँ पर sorry, यहाँ पर yeah, we were talking about this thing. So यहाँ पर हम GeoGebra, हाँ मतलब कि we will go to GeoGebra. This is an interesting website जहाँ से आप ये सब चीजें जिनका हम आंसर ढूंढ रहे हैं, ये हमें आंसर यहाँ से मिलेगा इनका. So oh sorry, it's I have to just a second. Yeah, I have to share. Yeah, again. Yeah, this will be very interesting. I hope you would like this one. This is GeoGebra, and this is an amazing software tool, especially among school mathematics teachers. Unfortunately, college mathematics teachers, they tend to, even though there are not so much things you can find here for college math, but some of these things जो अभी हम देख रहे हैं, that's very crucial. See, you would feel nice if you see it. मतलब यहाँ पर हमारे पास ये सीक्वेंस है और यहाँ जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है सीक्वेंस ऊपर नीचे दैट इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग. तो यहाँ पर ऐसे एप्सिलॉन दिखाने की कोशिश करते हैं. देखो ये एप्सिलॉन है, हम एप्सिलॉन को बड़ा छोटा कर सकते हैं. एप्सिलॉन बड़ा छोटा करेंगे, हमारा गोल क्या है कि टर्म्स जो है सीक्वेंस की टर्म्स है वो 1 के करीब आए. तो 1 के करीब वो तब आएंगे जब ये दो स्ट्रिप है ये इनके बीच में टर्म्स आ जाए. और जैसे हम शो एम, तो यहाँ देख सकते हो कि 4 के बाद सभी टर्म्स जो ग्रीन है वो इसके अंदर आ गए. हम एप्सिलॉन को छोटा कर सकते हैं. देखो छोटा करने का क्या नतीजा है, एम पर क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. एप्सिलॉन बड़ा करने से व्हाट इज गोइंग ऑन विद द वैल्यूज ऑफ एम. सो यू कैन सी एप्सिलॉन को छोटा करने से जिस वक्त का हमें इंतजार है, मतलब एप्सिलॉन छोटा करने का मतलब क्या है कि हम सीक्वेंस को एल के बहुत करीब लाना चाहते हैं और ये गोल पूरा होने में वक्त लग सकता है. सो कैपिटल एम यू कैन सी की, और यहाँ पर आप ये यू कैन सी दिस थिंग, सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. You can see the beauty of this software. See, you can see the terms to more and more indices, and you can change the sequence. It's not that this is the only sequence you have. You can write some other sequence here. For instance, if I write 1 upon square root of n, I can have this one. So this is horizontal zoom. I'm decreasing, so I can decrease it. So I'm doing it the opposite what we need to do. So you can see here, so it's not working, but matlab ki you can, it's due to the system problem, but you can do this thing. So that is what we were like going to discuss. So we can again think of ki हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यूज को छोटा करते हैं. तो m की वैल्यूज they tend to become larger. So this is the thing. So next, yeah, so और हम अक्सर एप्सिलॉन को छोटा लेने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों होता है, मतलब एप्सिलॉन तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, बट अक्सर whenever we think of any number, why we consider epsilon as something very small? Why? So we can discuss this thing later if time allows, but this is very interesting. Iska answer chupa hua hai, that whatever we have discussed until now. So next thing is now you can see the beauty of again intuition. So if you see this question in a textbook, you would see this proof.
And this bookish proof, whenever I see, when I was in undergrad, was pursuing my undergraduate degree, so mere liye these questions, these were very, like, I used to be very frustrated with these symbols. I didn't know that how do they come. So now we can see here the, like, how do they come. एप्सिलॉन को अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, एप्सिलॉन को हमारे दिमाग में आने वाला नंबर है, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स और जीरो के बीच का फासला हमारे दिमाग में आने वाला नंबर से कम हो। लेकिन ऐसा होने का सबूत क्या है? वक्त ढूंढना हमारा सबूत है, वक्त जिसके बाद हमेशा के लिए बात सच हो। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पर? an और 0 के बीच का फासला कम करना, मतलब 1/√, मतलब हम अपने गोल को अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं और आखिर में हमें मिलता है कि n greater than 4, मतलब ये हमारा गोल है। मतलब कैपिटल N क्या होना चाहिए यहाँ पर? सो कैपिटल N which is एक वक्त मिलेगा जिसके बाद हमेशा के लिए बात सच हो। और तो अब ऐसा ये सिलसिला तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, तो इसलिए हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ही लिखना चाहेंगे, और ये एप्सिलॉन चाहे कुछ भी हो, तो हम ये काम कर सकते हैं जो हमने हाफ के लिए किया, जो 1/3 के लिए किया। सो हम इस तरीके से n को हम ग्रेटर देन 1/ε² मान सकते हैं। तो आप दोबारा से आप बुक का प्रूफ देख सकते हो, मतलब हमने जो काम किया अगर उससे उल्टा चलेंगे, if we move upward, then we would get this thing. Now we can answer कि why the author of this book started with 1/ε². So this is really great. So यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब दोबारा से अगर हम जाएं जियोजेब्रा में आप देख सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ सेट करते हैं तो अभी हमें n की वैल्यू 5 मिली थी, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 सेट करते हैं तो n की वैल्यू 10 मिली थी। तो क्या ये बात जियोजेब्रा में भी दिख रही है? We can look at it. So we can again look at the things in GeoGebra with the same function. So again 1/√n. It's not working, I think. Yeah. So I can. Yeah, I want to refresh it. So we can see that here. So I have network issues, I'm sorry. So, but you can see this thing. This is very nice to see. You can visualize the things, what is going on with all the processes. So again, we have, I'm sorry, I have to share, I have to go back and forth. So, but I don't know, I didn't have any good solution to this thing. So again, now can you tell me, this is a sequence, -1 1 -1 1, तो यहाँ पर हम शो करना चाहते हैं कि 0 को पे कन्वर्स नहीं करते, तो उसके लिए मुझे फिर से जियोजेब्रा पे जाना पड़ेगा, because it will be very interesting. Let me do it again. Let me try. I think it should work now. Just a second. Yeah, I think it should work. I'm sorry, unfortunately these are network issues. So yeah, I can try here. I have another window. So yeah, yes, now it should be working. And now we can try 2 examples. First example था 1/√n. So now see, हम क्या कर रहे थे, हमने हाफ लिया था और 1/3 लिया था, तो आप देख सकते हो हाफ मतलब 0.5, तो n क्या था हमारे पास वहां, सॉरी यहाँ 1/√n, मतलब 0 पे सेट करेंगे हम इसको, तो वहां n क्या था, was n 4 last? Yeah, please say. So we can see here
अगर हम एप्सिलॉन को 1/3 करते हैं तो 1.33 वी कैन से, तो 0.33 करते हैं तो ये 10 आना चाहिए। ओह दैट्स 10। सो 10 के बाद हमेशा के लिए देखो सीक्वेंस हमेशा के लिए इसी के अंदर फंस जाएगी, और इसके अंदर फंसने का मतलब ये स्ट्रिप छोटी से छोटी की जा सकती है। एप्सिलॉन हमारे दिमाग में आने वाला नंबर है, उसको छोटा करते जाएंगे, स्ट्रिप छोटी होती जाएगी, और स्ट्रिप के अंदर फंसने का मतलब है सीक्वेंस इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द नंबर दैट वी आर कॉलिंग लिमिट। सो और फिर से हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे थे अभी, मैं अभी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस की बात कर रहे थे। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से एप्सिलॉन है जिनके लिए वो वक्त मिलता है, जिस मतलब वक्त का मतलब ये है कि टाइम इंस्टेंट आफ्टर विच द सीक्वेंस इज इनसाइड दिस द स्टेप। सो यहां देख सकते हो आप एप्सिलॉन को बढ़ाने की कोशिश करना, एप्सिलॉन को अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये सीक्वेंस इसके अंदर आ गए। देखो एप्सिलॉन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, एप्सिलॉन बढ़ाने का मतलब यह है कि हम मतलब कि सीक्वेंस की टर्म और एल के बीच का फासला बड़ा कर रहे हैं। हमारा मकसद है वो फासला कम करना ताकि उसको लिमिट बना बोल सके। तो अब एप्सिलॉन बड़ा करना इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इज व्हाई एप्सिलॉन इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ वेरी स्मॉल नंबर। सो और एप्सिलॉन, अब ऐसा कौन सा एप्सिलॉन है, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स कि ऐसा कौन सा एप्सिलॉन है फॉर विच एन एग्जिस्ट। कोई एक ऐसा एप्सिलॉन क्या आप बता सकते हो जिसके लिए n एग्जिस्ट नहीं करता है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू? Yeah, your participation is appreciated. Oh yeah, I can see in the chat box, can we say that as epsilon decreases? Yeah Shweta, that's a great point. अब देख सकते हो कि एप्सिलॉन मतलब कि एप्सिलॉन को कम करने से मतलब कि हमें थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा वी कैन work on. Shweta, you write कि epsilon, if epsilon is decreased m increases। मैंने m increases नहीं बोला, मैंने बोला m tends to increase। क्या पता हो सकता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट सीक्वेंस हो। अब कांस्टेंट सीक्वेंस हो तो इसमें अब एप्सिलॉन आप बढ़ाते रहो, एप्सिलॉन बढ़ाने से m पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस हमेशा के लिए स्टेप उसी के अंदर है। सो वी शुड से इफ एप्सिलॉन डिक्रीजेस तो m के बढ़ने के आसार हैं, it can potentially increase। So that's the point here। So again, going back to my slide, so I hope you have got what I was saying। Okay, so yeah, it's very inconvenient to share, to go back and forth, so but yeah, so this is the sequence that we were talking about। Yeah, this is again a limit of a function at a point। यहाँ पर जैसे जैसे हम किसी पॉइंट के पास जाते हैं तो फंक्शन कहीं जाने की कोशिश करता है, मतलब फंक्शन और एल के बीच का फासला, ओ सॉरी मैंने थोड़ा गलत, इट्स अ टाइपो हियर, x टेंड्स टू c होना चाहिए यहाँ पर। सो मतलब अगर fx और 1 के बीच का फासला कम होता जाएगा, कब? जब x c के आसपास भटक रहा होगा। अब वो कहाँ भटक रहा है वो ढूंढना हमारा मकसद होगा। अब मतलब fx और 1 के बीच का फासला कम से कम होता जाएगा, लेकिन कब? मतलब कि मतलब एप्सिलॉन फिर से हमारे दिमाग में आने वाला नंबर है और हमारा मकसद होगा कि हमारे दिमाग में आने वाले छोटे से छोटे नंबर से भी छोटी दूरी होना fx और 1 के बीच। सो लेकिन ऐसा कब? सबूत क्या है? सबूत यह है कि हम वो c के इर्द गिर्द का दायरा, we would like to find like how much earlier how much earlier means c minus delta to c plus delta, means the time period that starts before c, the time period that starts after ends after c। in this time period the thing that we wish that has happened। मतलब कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अब कोई बोलता है कि अब कोर्ट में गया है कोई, तो if you want to prove that कि मैंने कुछ चोरी की है, तो अब ये कोई बंदा ये बोल सकता है कि देखो 12 बजे मैंने ये इसको वहां देखा था। तो मतलब इसको थोड़ा सा आप इसको नाइव सा आर्गुमेंट दे रहा हूं मैं, इट्स नॉट ए गुड आर्गुमेंट बट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि 12 बजे देखने का मतलब ये है कि हाँ सच में, हाँ फिर तो ये सच ही बोल रहा है कि हाँ ये गया होगा, इसने चोरी की होगी। सो टाइम ढूंढना हमारा मकसद होता है, डेल्टा ढूंढना यहाँ पर मकसद होता है।
सो फिर से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, आई डोंट नो वी डू हैव सो मच टाइम, बट फिर से हमारे पास सवाल हो सकते हैं कि एप्सिलॉन के छोटा करने से डेल्टा पर क्या असर पड़ेगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 के लिए डेल्टा, मतलब ये आप यू कैन आंसर दैम वेल। यहाँ पर आई ट्राई टू पिक्चराइज द थिंग्स, आई डोंट नो इफ दे आर इफेक्टिव और नॉट। दिस इज एनी फंक्शन, ये सी कोई पॉइंट है, एंड इट्स we want to show that कि फंक्शन और L, फंक्शन की लिमिट L है। तो ये दो रॉड्स हैं, ये रॉड्स मतलब कि डेल्टा ऊपर डेल्टा नीचे, सो L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। और हमारा अब हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन रॉड्स के बीच में कब है, वो ढूंढना चाहते हैं। मतलब सी से देखो कितना पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, सी के बाद भी, तो कितना पहले कितना बाद, मतलब हम मिनिमम लेंगे, मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, सो दैट वुड बी आवर डेल्टा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर डेल्टा ढूंढना हमारा मकसद होता है, सो दैट इज आवर टास्क, एंड एप्सिलॉन इज एनी गिवन नंबर। सो एप्सिलॉन को हम डिक्रीज कर रहे हैं, देखो हम रॉड्स को करीब लेके आ रहे हैं, एप्सिलॉन को डिक्रीज करने का नतीजा देख सकते हो कि वो डेल्टा यहाँ पर श्रिंक नहीं हुआ, दैट वाज अ प्रॉब्लम विद द एनिमेशन, सो डेल्टा इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन सी सो जैसे जैसे स्ट्रिप को पास में लेके आएंगे, सो वो वक्त जो हमें मिलेगा सी से पहले कितना बाद कितना, वो भी छोटा हो रहा है, बट वो बड़ा हो छोटा, इट डजंट मैटर, वी नीड डेल्टा। सो शोइंग अ डेल्टा मतलब कि ये कैसा वक्त होना सी से पहले से सी से बाद का तब का, जहां पर क्या बात सच होनी चाहिए, फंक्शन एंड एल दे शुड बी सफिशिएंटली क्लोज, सो दैट्स द पॉइंट। सो अगेन we can answer now, why do we consider epsilon as a small number? So that thing we have discussed. So this is a Dirichlet function. So Dirichlet was a mathematician, so it's named after his name, this function. So यहाँ पर मतलब x जब rational है तो 1, irrational है तो 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा ये डॉटेड ग्राफ है, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर आप देख सकते दो रॉड्स हमने ड्रॉ की, और इनके बीच ऊपर एप्सिलॉन नीचे एप्सिलॉन। अब रॉड्स को हम पास में भी लेके आ सकते हैं, हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर ये कोई पॉइंट है सी से पहले बाद, सी से पहले बाद का कोई भी नेबरहुड हम लेते हैं। देखो फंक्शन जो है इन रॉड्स से बाहर निकला हुआ है, कब बाहर निकला हुआ, व्हेन एक्स इज इरेशनल। सो इट मीन्स दैट कि नेबरहुड को चाहे कितना भी बड़ा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फंक्शन इज बड़ा छोटा, मतलब कि फंक्शन इज like there are instances when function is not within the rows, so that means that this function, so which epsilon is it? So can you write in the chat box जिस जो हम draw कर रहे हैं, can you tell me an epsilon for which there is no delta, कि चाहे कितना भी हम छोटा बड़ा कर ले, can you write in the chat box? Okay, any suggestion, anyone? So you can see that here ये जो डेल्टा है, यहाँ जो एप्सिलॉन है वो 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारी रॉड्स जो हैं ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है उससे नीचे होना चाहिए। So I don't know if it is helpful or not, I'm sorry, but yeah, this is what, like, if you say if you have any problem, I don't know if I'm explaining it in a great way. So but anyhow, this should be helpful for most of the people. So there are other functions which we unfortunately can't discuss here. So yeah, there is a icebreaker time. So Igor Tam was a mathematician from Ukraine. Ukraine was time Soviet Union ka part tha. It's around 1958. So Ukraine is not like jaise aaj hai. So Ukraine was a part of Russia, was also one republic in USSR. So there was a food shortage. There was a famine in 1958. And Igor wanted food. He started like going outside, and he wanted to visit a village. But there, usko raaste mein kisi ne like घेर लिया. There were bandits, and they wanted ki, stop, who are you?
So take him to the leader. So this is the leader. He asked, "What are you doing here?" Oh, he was frightened. He said, "I'm a university professor." So then, what kind of professor? I'm a professor of mathematics. So, okay, if you're mathematics, then tell me, this is the leader of the bandit, who wanted to loot the professor. So he said, all right, then give me an estimate of the error one makes by cutting off Maclaurin series at the n of term. Who was frightened? What the hell is it? So like at the one point, he computed the error that one can have, like truncating the Maclaurin series at the end of term. So there is a book, a very famous book, Things You Do Not Know. उसमें एक छोटा सा chapter है, Calculus Can Save Your Life. So it is not connected to today's discussion. It was just an icebreaker, I was saying. So this is a plane. This is John. John का घर है. John का uncle Charlie बाहर रहता है. John wants to go to his uncle Charlie, लेकिन वो ये means of transport नहीं है. John के पास कुछ gifts हैं, magic carpet and hoverboard. लेकिन hoverboard और जो magic carpet है उनको चलने का there are some rules. Rules ये है कि hoverboard जो है hoverboard है वो 3-1 is a vector for hoverboard and इसका मतलब यह है कि वो 3 यूनिट ईस्ट चलेगा और 1 यूनिट नॉर्थ चलेगा. और मैजिक कारपेट के लिए भी ऐसा ही वेक्टर है कि 1 यूनिट ईस्ट और 2 यूनिट नॉर्थ. So this is from a very famous research paper I am like presenting. This is not my own. These are figures. This animation is mine, but this is taken from a research paper on mathematics education. So again, ये अंकल का घर है और ये जाना चाहता है और जाने का मतलब आप देख सकते हो कि होवरबोर्ड से जाने का मतलब कि वही 1-2 मैजिक कारपेट का अलग तरीका है जाने का. तो वो वहां तक पहुंच जाएगा तो वो कैसे, मतलब पहुंचने का तरीका कुछ और भी हो सकता है. You can go like this, you can go like this and so मतलब कि you can see here कि होवरबोर्ड का 4 घंटे तक इस्तेमाल हुआ है और मैजिक कारपेट 2 बार इस्तेमाल हुआ है और वो वहां ठक अंकल के घर पहुंच गया. So these are vectors actually. So इनको जोड़ने के बाद we get the address of the uncle. So here what is going on? These 1 2 3 4 1 2 these are scalars. They are scalar and we add them, then it becomes a linear combination. And this is the time. कितने time तक? हम time जरूरी नहीं कि that may not be an integer. That can be a irrational number. So that can move backwards as well. So they can be anything. They are scalars. These are vectors, and if we add them, we get linear combination. And if we change C1, C2 values of C1, C2, we change our trips. उसके visit करने के तरीके बदलेंगे और अलग-अलग अब vehicles V1, V2 क्या है? Hoverboard और magic carpet, जहां वो उसके जाने के तरीके. So again, now this is very interesting कि मान लिया जाए कि uncle doesn't want to meet up with John and he wants to like hide. So वो कौन सी जगह हो सकती हैं? What are those locations जहां पर अंकल छुप सकता है और जॉन उसको ना ढूंढ पाए? So अब देखो, अब यहाँ क्या हो सकता है? अब अंकल छुपा हुआ है and this is the place where uncle is there, but John wants to search him. John ने अपना stop, yeah, he stopped. He can go by magic carpet. Stop. He can stop. So now what we do, we are doing a geometrical activity. We are just dropping a line which is parallel to like the path that was traveled by the magic card. And इसी तरीके से एक और line. Then it becomes a parallelogram.
नाउ यू कैन सी हियर कि ऐसे इंस्टेंसेस जहां ये डॉट, ये पहले वाला डॉट है, दूसरे वाला डॉट है, मतलब यहाँ पर वो जॉन जा सकता है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद इफ वी ऐड दीज वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, John can go to his uncle's home. So it can happen at any place. मतलब we can draw such parallelogram no matter where Charlie hides. So Charlie के लिए छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। So मतलब कि जॉन के पास कहीं भी जाने की पावर है। जॉन कैन गो एनीवेयर विद हिज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ऐसे इस काबिलियत को जहां जहां वो जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन। सो इट्स स्पैन इज द एंटायर प्लेन। सो मतलब स्पैन अगर एंटायर प्लेन है, इसका मतलब इट मीन्स दैट जॉन कैन गो एट एनी प्लेस। जॉन डजंट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। जॉन कैन गो एट एनी प्लेस। सो जॉन के पास कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं होती, दैट इज स्पैनिंग सेट। मतलब एक आम भाषा में आप बोल सकते हैं। सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। मान लिया थ्री डायमेंशन में है और उसके पास दो नहीं तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इस बार डोरीमोन आ गया है। सो डोरीमोन नाउ अगेन इनके पास भी अपने उसूल हैं चलने की। सो नाउ जॉन अगेन, लेकिन कंस्ट्रेंट्स ये है कि एक ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यू कांट यूज इट ट्वाइस। सो जॉन चला पहले व्हीकल की मदद से कुछ टाइम तक, दूसरे व्हीकल की मदद, बट जॉन वांट्स टू गो होम बैक। जॉन कुछ भूल गया, मुझे वापस घर लाना। कैन जॉन गो बैक टू हिज होम? जॉन कैन गो बैक टू हिज होम प्रोवाइडेड ये जो एरो है ये ओरिजिन की तरफ पॉइंटेड हो। लेकिन क्या ये पॉइंटेड है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। कैन जॉन come back home? If John can come back home, that means these vectors are linear dependent. Otherwise, these are independent. See, we can see here. यहाँ पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि this is the linear combination of vectors, और हम चाहते हैं कि वो जीरो के इक्वल हो जाए, मतलब वो घर पर पहुंच जाए। और घर पर पहुंचे कैसे? कि मतलब कि बाहर निकले, मतलब ट्रिप निकाले घर से बाहर और वापस आए। तो घर से बाहर निकालने के लिए इसका मतलब C1, C2, C3, these are times, periods. So it means that C1, C2, C3, they are like, ma'am, how much time I do have? Around 10 to 15 minutes. Okay, fine. So I think I should be able to complete. यहाँ पर सबसे क्रूशियल बात यह है कि जॉन को घर से बाहर निकलना मतलब कि कम से कम every mode of transport should be used at least once. So यहाँ पर C1, C2, C3, they should not all be zero. So that is the point here. So यहाँ पर आप इसको define कर सकते हो. This is the standard definition that we find in the textbooks. So I may not be able to discuss this thing here. So यहाँ पर आप बहुत सारी थ्योरम्स को सिर्फ इसी चीज से आप मतलब कि बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर जॉन कहीं भी जा सकता है, मतलब स्पैन, मतलब कि उसके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जॉन के पास यहाँ पर फिलहाल हम जो बोल रहे थे, जॉन के पास अगर जॉन वापस घर आ सकता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई कमी नहीं, मतलब कि उसके पास मतलब कोई यहाँ पर जॉन को वापस घर आने का मतलब क्या है कि उसके पास कोई ऐसे फालतू का वेक्टर नहीं। मतलब क्या है फालतू का वेक्टर होने का मतलब ये है कि अगर कोई फालतू का वेक्टर होता, दैट मीन्स वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हियर, but I am saying it like maybe you can see it again in recorded videos. यहाँ पर फालतू के वेक्टर का बोलने का मीनिंग ये है कि वो बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो अगर वो वाकई घर पहुंचा है तो जो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो बाकी दो का सम है। इसका मतलब वो एक वेक्टर फालतू का वेक्टर है। तो फालतू का वेक्टर आने का मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट है, मतलब घर पहुंच गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पैन का मतलब कोई कमी नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब कोई फालतू नहीं है। सो यहाँ पर एक बहुत ही देयर इज एन आइडियल सिचुएशन। सपोज देयर इज अ मतलब कि अ बॉय हु इज गोइंग टू स्कूल। अब उसको पॉकेट मनी चाहिए। बच्चा चाहेगा ही वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर मनी, एंड व्हाट वुड मतलब कि वो चाहेगा he shouldn't have any shortage of money. But what about the parents? They would think that we are not giving to give money
like so much money कि उसे फालतू की कोई पैसा नहीं देना है. So मतलब यहाँ पर there is an ideal situation कि ना तो कोई चीज फालतू ना कोई चीज की कमी. So जब ऐसी चीज हो, मतलब स्पैनिंग सेट भी हो, इंडिपेंडेंट सेट भी हो, मतलब बच्चे की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो. So जब ऐसा होता है, that becomes a basis. So that is the basis of a vector space. So basis is a न्यूनतम जरूरत वाली चीज. So that thing you can like think of. So these are the theorems which you can do if you understand this thing. So यहाँ पर this is the last thing we are going to do. यहाँ पर this is again very interesting. Geometrically we can understand it. So हम जानते हैं कि these are eigenvalues of a matrix A, और यहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. That is not mentioned here. So eigenvector is x here. X should be non-zero. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ax और lambda x, if they are same, it means that they should be in the same direction. So ax or lambda x, मतलब av and lambda v, so they should not be in different directions. So लेकिन अब यहाँ पर आप, how do you compute in textbooks? You find characteristic polynomial equation and find roots, and this is what you do formally. But geometrically it can be done. We are not interested in the bookish thing here, so we are interested in the geometrical part. So here, so यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज यहाँ पर I would like to say here. Let me share the whiteboard. I don't know how helpful it would be. For instance, यहाँ पर ये कोई this is a plane, और यहाँ पर ये कोई वेक्टर है, this is some vector x, and अगर हम A मैट्रिक्स से x की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, so again it becomes a column vector. This is a column vector, and this can be this vector ax. So now our aim is what? Like x is an eigenvector when these two things, मतलब कि ax जो है ax और lambda x है, they are in the same direction, मतलब lambda x. यहाँ पर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज, this thing should be noted that we are in field R, we are not in field complex plane. So यहाँ lambda जो है that is a real number. So ये दोनों सेम आने का मतलब क्या है कि इन दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. So this is not the desired case. This is not the desired case for eigenvalue. This is not the desired case. We want them to be in the same direction. So like यहाँ पर again I am saying like we were like discussing this thing. You can see here कि हम चाहते हैं AV and lambda V, they are in same direction. If that thing happens, then that become an eigenvector, और जो lambda होता है that becomes an eigenvalue. So यहाँ पर देखो, अब फिर से एक चीज यहाँ पर we can look at again. It will be very important to look to go to GeoGebra again. This will again be a nice thing. Let me share it again. Yeah, it should work again. Okay, I'm sorry, I don't know to what extent you are able to understand, but yeah, it should be great, I think. ये हमारे पास, this is a matrix, और यहाँ geometrically we can see how to visualize eigenvalues and eigenvectors. See, what is P here? P is any vector, जो x, the thing that we were calling P, that is the x, that is P here. And T की जगह, A की जगह T आया हुआ है. देखो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको इधर उधर करता हूँ, तो x बदल रहा हूँ, तो ये ax है. So x के बदलने से A, this is matrix A. So x के बदलने से A बदलता है. So यहाँ पर अगर मैं इसको, मैं चाहता हूं कि दोनों एक डायरेक्शन में आए, that's it. So it means what? It means that x, मतलब कि and ax, they are in the same direction. It means that कि ये वाला जो p है, p मतलब x, this is eigenvector,
So we can see eigenvectors here. See, एक और eigenvector है, देखो ये वाला eigenvector है, तो वहां उसको भी टेस्ट किया जा सकता है. देखो, see, you can see here. फिर से, yeah, they are in the same direction. If ax and lambda x, they are in the same direction. In fact, they are equal. So ax and a, and this thing to be noted that we are in field of real numbers. We are not in the field of complex. Go to GeoGebra. This is a wonderful website. And if you are a teacher, so there are wonderful online courses where you can learn how GeoGebra can be used in a classroom. So again, I am going to, yes. Yeah, this is again an interesting thing. This is the last thing I'm going to discuss. Reflection matrix का मतलब क्या है? This matrix is reflection matrix. इसका मतलब ये है कि I think I should be, yeah, I should be able. इसका मतलब ये है कि मतलब अगर x y की जो इमेज होगी, x y की इमेज होगी, this is x y, this is x comma y. Yeah, please bear. I think there is some technical problem from Praveen's side. He will be connecting with us shortly. Yeah, I'm sorry, my network had issues. So yeah, yeah, can you please allow me to share the screen? Yeah. Okay. Yeah. Sir, we are working on it. Just give us. So yes. It's done. You can share now. Okay, thank you. Okay, so we were discussing this point that yeah, that like we were discussing this point कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे हम. तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब ये मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ ये मेरे पास x है और ये ax है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर ax को यहाँ लेके आऊं तो ax भी यहाँ क्लोज आ जाएगा y के एक्सिस के पास. मैं y एक्सिस के और करीब आता हूँ, then ax is also near to y. So जब हम पूरा y पे आएंगे, then ax and x, they are in the same direction. So this is an eigenvector of this matrix. So this is really great. Or yahan, this is again a very famous example. You can find this question in any competitive exam. So here you can see this is a rotation matrix. If you know, like it rotates by 45 degrees. So this ये 45 डिग्री रोटेट कर देता है चीजों को. और मतलब कि ax और जो x है उनके बीच का एंगल जो है that is always 45 degree. Means that ax and x, they can't be in the same direction. So it means that there are no real eigenvalues.
तो इसके आइगन वैल्यूज जो आएंगी they are non-real. If you know characteristic polynomial equation, you find it. So any rotation matrix, you would find that thing. So I would like to stop here for questions. Yeah, I think I am done with the things. Let me check if anything important is left, or yeah, we can have questions. Like, Okay, sir. Okay. Thank you so much. yeah. Thank you so much, sir, for such an enlightening, informative, and engaging session. As we can see, the chat box is filled with a lot of compliments for you. And for the further proceedings of the event, now I would like to call Miss Suniti, my dear colleague, to take the question answer session round and for the formal vote of thanks. Over to you, Suniti, ma'am. Thank you, Anchal. Participant, if there is any question, you can write in the chat box or can unmute yourself. Yeah, I can see one question by Shweta. Yeah, Shweta, like I can. Yes, there is a question, sir. Kindly explain geometrically why there are no real eigenvalue for rotation matrix. Yes, if there is a rotation matrix, if there is a rotation matrix जो 45 degree rotate करता है, that is what we had, then it means that if this is x, then ax, this is ax, then x and ax, the angle between them is 45 degree. This is 45 degree. So it means that ax and lambda x, they can't be equal, because lambda x, if lambda is a real number, if we are in a real field, so it means that lambda is also real, that is a scalar. Then if it is r, it comes from r, तो ये lambda x क्या होगा, इसी लाइन पर होगा, तो lambda x इसी लाइन पर होगा और ax इस दिशा में है, तो lambda x और ax कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे in r, over the field r. So that means ऐसा कभी संभव नहीं है अगर lambda r field के अंदर है. So that's why no such real eigenvalues exist for a rotation matrix. I hope it helps. There is another question from Smil. Does it generate complete eigenvalues along with rotation reflection? Does it generate complete eigenvalues along with, I don't understand the meaning of this thing. Generates rotation reflection. I couldn't get it, sorry. Neil sir, can you reframe the question? Or you can unmute yourself, sir. మార్పులేం లేవు, మీరు చెప్పినట్టు మార్చాను, అది మీకు కూడా ఎందుకు అవసరం లేదు నాకు ఈ క్లాస్ వర్క్ నేను యాడ్ చేయలేదు, క్లాస్ వర్క్ ట్యూటోరియల్కి వచ్చాక కొంచెం అటు ఇటు మార్చాను. Sorry, Sunil ji, I am not able to hear you. I'm sorry, but what I mean to say that if you say generate अक्सर लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आप स्पैन का यूज करते हो कि क्या रो वेक्टर जनरेट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कंप्लीट आइगन वैल्यूज को जनरेट की बात करो, तो आइगन वैल्यूज आर स्केलर्स, दे आर नॉट वेक्टर्स. So हम scalars को generate करने की, we do not talk about that thing. So I think there is some like the thing you want to convey, you would better put in some different words. So generate eigenvalue, it's like, but what I can say कि yeah, I think it might help you कि अगर हमारे पास कोई rotation matrix है, तो अब देखो 2x2 मैट्रिक्स है, देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी. सो और चाहे वो उसके 2 रूट तो होंगे, रियल या नॉट रियल, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. सो इट मींस दैट इट्स 2 रूट्स exist and those roots are called eigenvalues. So I hope it helps. But if you still have any issue, yeah, please come, you can contact me on Facebook. I really appreciate that.
Any other question, participants? I think there is no question, sir. The explanation, everything was so beautifully explained, and I think everyone got the point. Now I, on the behalf of Department of Mathematics, I propose a vote of thanks. A graceful and warm afternoon to our most valued, very humbled resource person, Praveen Chikara sir, worthy principal ma'am, Dr. Kiran Angra, all the teachers and the students joined from various institutes. It seems to be a great honor to propose the vote of thanks on this international webinar, Visualizing Analysis on and Algebra, to all who helped us in making this webinar a very resounding success. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to the distinguished resource person, Parveen sir, for making an excellent presentation and making this webinar very meaningful and interesting, unfolding the concept of sequence, convergence, limit, linear algebra so beautifully with simplicity and does the depth. Means the way of explaining, the way of presenting, everything was so beautiful. Really a unique way of learning and teaching, sir. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time with us, and hope that we will connect again. And now I would like to express our deep gratitude to our respected principal ma'am, Dr. Kiran Angra, for her esteemed presence and for providing immense support to make the webinar successful. I express my sincere thanks to faculty members of various institutes who helped us to join the student in this webinar. And I express sincere thanks to my dear colleague, Ms. AANCHAL, for managing all the things. Finally, I thank the wonderful students who have turned up in a great number and for their active participation. Thank you so much. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you all. I think now feedback link. Yeah. The feedback link has been shared in the chat box. Thank you, Praveen sir. Hopefully we will connect again. Thank you very much. And I want to say again, thank you for this opportunity. Thank you, Principal Ma'am, and thank you everyone, and thank you participants for it's a great thing to be with such participants. Thank you very much. Okay. I hope Praveen, As it is all. college mathematics department may go a long way with you, your NGO. Thank you, ma'am. Thank you for your trust. So that you can make this subject more interesting and more comfortable to the students. Thank you very much, ma'am. Ma'am, we are working on these things. Like for the last 2 years, I have been working with researchers who specialize in the way we teach, the way we learn, and we are preparing for teacher education programs in which we deal with issues that teachers face and how they can be resolved. And we are planning for several teacher professional development workshops and from our university, and we are looking forward to that thing soon. Very nice. We will be going. This is a first step, or I should say a single step for the miles to go with you. Thank you very much. Okay. Congratulations, AANCHAL and Suniti, for taking interest and for organizing this event and searching a precious gem like you for this event. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. See you sometime. Bye-bye.